Pakistan, Islam and Education. Ashraf Jehangir Qazi. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 20, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. When a patient's condition turns critical, doctors often say it is time for dua, prayer, more than dawa, medicine or treatment. Current Pakistani conversations across all classes about the state of the country suggest a similar condition. Such a state in a patient is often the result of multi-organ failure. In Pakistan, the organs of the state, i.e. its political, social, economic and administrative institutions, are failing. The military, as de facto principal political, economic and administrative decision-making institution, has brought about this state failure by exceeding its constitutional limits. Civil institutions and the political process have also failed. But civilian and political culpability, on display every day, has been secondary. Hopefully, the new military leadership is following through on its claim of turning the page. The country needs to emerge from its present condition to survive. Can it? The question is not legitimate because it allows a negative answer. The country has to do whatever it takes, whatever the odds may be against it being able to do so. So where do we go from here? What is to be done? These are legitimate questions because they implicitly rule out answers such as nowhere and nothing. Existential questions must generate existential responses. When they emanate from the political condition of the country, the responses can only come from the people. But the people are an inchoate entity. They are more a concept than an immediate instrument of political change. To become that, they need to be enabled by well-wishers, not manipulated by those who fear and wish to control them. The country needs to emerge from its present condition to survive. Can it? This is why Chomsky has little respect for media, academic, administrative, and moral intellectuals who profess their identification with the people's interests without seeking to catalyze and realize their potential to change their condition. They make a decent living working for corporate owners and the government, or by entertaining elites and exploiting the sentiments of the people. Sartre accused them of living in bad faith. Gramsci counseled pessimism of the intellect, recognizing realities, and optimism of the will, overcoming them. Climate heating may be the primary global existential challenge for mankind. But there are more immediate challenges. The French Yellow Vest slogan, "You are concerned about the middle of the century, we are concerned about the middle of the month," encapsulates the dilemma of the poor all over the world, especially in developing countries. The corporate state capitalist system, which prioritizes class warfare and profit maximization, exploits this situation by greening its ultimately fatal carbon emissions-based economic strategies on the one hand, and by supporting delusory and ephemeral poverty alleviation over radical and structural poverty reduction reforms on the other. Only working class-based people's movements can reconcile essential short-term compromises with prevailing realities, and staying the course for longer-term systemic change towards eco-socialist global and national Green New Deals. Such movements are the only hope for the survival of mankind. Political leaders and power brokers who oppose them are the problem. Middle-class intellectuals and technocrats can no longer fake it. They are either with or against them. Let us briefly look at Islam and education. Islam enjoins belief, iman, and action, amal. It is actively humanitarian and merciful. It provides the idiom in which social and political messages need to be couched for the people of Pakistan to accept and own them. The doors of ijtihad, which were closed 1,000 years ago, need to be reopened to reclaim the original message of Islam, which through the Quran and the Sunnah spoke directly to the individual believer, not through the medium of a class for whom faith became a profession and a means of influence and power. The Prophet, PBUH, said his ummah will never agree in error. It is this confidence, lost for 1,000 years since the Mongol destruction of Baghdad, which needs to be recovered for an Islamic civilizational renaissance to commence, in which faith,
science, and human intuition reinforce one another to comprise a transcendent unity and a transforming power for deliverance from catastrophe. Our scientific and cultural heritage of Baghdad, Andalus, Iran, and Central Asia needs to be repossessed and carried forward. We are all aware of the hadith, which says search for knowledge, even from China. The search for knowledge is the essence of science and education. Without an educated public opinion, no reform can be lasting and no national goal can be achieved. Public education is not a priority in Pakistan. It can never be within current political and social structures. It is a human right, and human rights in education are not priorities, except rhetorically and in seminars, policy documents, and manifestos. Resource constraints is another name for low priority. In today's world, the concept of education must change. The great German educator, William Humboldt, said education should not be a matter of pouring water into a vessel, but rather it should be conceived as laying out a string along which learners proceed in their own ways, exercising and improving their creative capacities and imaginations, and experiencing the joy of discovery. Chomsky recalls one of his teachers, when asked what will be covered in his semester, said the question should be what will be discovered. Unfortunately, authority, orthodoxy and syllabuses insist on filling vessels. Parents rightly want their children to find remunerative jobs. Hence, education as a search for knowledge will have to be a longer-term endeavor which should, however, begin immediately. Experts agree children should commence their primary education in their mother tongue. They can then switch to regional and national languages and, at a later stage, become familiar with an international language. Pakistan is fortunate in this regard. Urdu is well understood throughout the country and is the lingua franca between people of different regions. Familiarity with English, if not always proficiency in it, especially among the middle and upper classes, has been around for generations. The building blocks for a nationally educated and internationally interacting society are available. Constructing one must become an insistent priority. The writer is a former ambassador to the US, India and China and head of UN missions in Iraq and Sudan. Published in Dawn, January 20, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. जब किसी मरीज की हालत नाजुक हो जाती है तो डॉक्टर अक्सर कहते हैं ये दुआ का वक्त दवा इलाज से ज्यादा दुआ का है। मुल्क की हालत के बारे में तमाम तबकों में मौजूदा पाकिस्तानी गुफ्तगू इसी तरह की सूरत हाल की निशानदेही करती है। मरीज में इस तरह की हालत अक्सर कसीर अज़ा की नाकामी का नतीजा होती है। पाकिस्तान में रियासत के इदारे यानी इसके सियासी, समाजी, माशी और इंतज़ामी इदारे नाकाम हो रहे हैं। फौज असल में अहम सियासी, माशी और इंतज़ामी फैसला साज इदारे की हैसियत से अपनी आईनी हुदूद से तजावुज़ करते हुए इस रियासती नाकामी को जन्म दे रही है। सिविल इदारे और सियासी अमल भी नाकाम हो चुके हैं, लेकिन सिविलियन और सियासी जिम्मेदारियां जो हर रोज़ जाहिर होती हैं, सानवी हैसियत रखती हैं। उम्मीद है कि नई फौजी क़यादत सफ़ा पलटने के अपने दावे पर अमल पैरा होगी। मुल्क को जिंदा रहने के लिए अपनी मौजूदा हालत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये कर सकते हैं। सवाल जायज़ नहीं है क्योंकि ये मनफी जवाब की इजाज़त देता है। मुल्क को जो कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे ऐसा करने के काबिल होने के खिलाफ जो भी मुश्किलात हों, तो हम यहाँ से कहाँ जाएं? क्या करना है? ये जायज़ सवालात हैं क्योंकि वो कहीं नहीं और कुछ भी नहीं जैसे जवाबात को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं। वजूदी सवालात को वजूदी जवाबात पैदा करने की ज़रूरत है। जब वो मुल्क के सियासी हालात से निकलते हैं तो रद्द-ए-अमल सिर्फ अवाम की तरफ से आ सकता है, लेकिन लोग एक गैर मामूली वजूद हैं। वो सियासी तब्दीली के फौरी आले से ज़्यादा एक तसव्वुर हैं। ऐसा बनने के लिए उन्हें खैर खाहों के ज़रिया काबिल बनाने की ज़रूरत है, न कि उन लोगों के ज़रिया जो डरते हैं और उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। मुल्क को जिंदा रहने के लिए अपनी मौजूदा हालत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये कर सकते हैं।
यही वजह है कि चुम्सकी मीडिया तालीमी, इंतज़ामी और इखलाकी दानिश्वरों का बहुत कम एहतराम करते हैं जो लोगों के मफादात के साथ अपनी शनाख्त का दावा करते हैं और उनकी हालत को तब्दील करने की अपनी सलाहियत को महसूस करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कारपोरेट मालिकान और हुकूमत के लिए काम करते हुए अशराफिया को तफरीह फराहम करके और लोगों के जज्बात का इस्तेहसाल करके एक महज़्ज़ब जिंदगी गुजारते हैं। सार्थक ने उन पर बुरे अकीदे में रहने का इल्ज़ाम लगाया। गिरामिसी में अक्ल की नाउम्मीदी, हकायक को पहचानना और इरादे की उम्मीद उन पर काबू पाना का मशवरा दिया। आबो हवा की गर्मी बनी नौ इंसान के लिए बुनियादी आलमी वजूदी चैलेंज हो सकता है, लेकिन फौरी तौर पर मजीद चैलेंजेस मौजूद हैं। फ्रांसीसी येलो वेस्ट का नारा अब सदी के वस्त के बारे में फिक्रमंद है। हम महीने के वस्त के बारे में फिक्रमंद हैं। पूरी दुनिया में खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में गरीबों के मखमसे का अहाता करता है। कारपोरेट रियासत का सरमायादाराना निज़ाम जो तबकाती जंग और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने को तरजीह देता है, एक तरफ कार्बन के अखराज पर मबनी अपनी मुहलिक माशी हिकमत अमली ओहे को सब्ज़ बनाता है और दूसरी तरफ बुनियादी और साख्ती गुर्बत में कमी की इस्लाहात के बजाय आर्जी और आर्जी गुर्बत के खात्मे की हिमायत करता है। सिर्फ मेहनतकश तबके पर मबनी अवामी तहरीकें ही मौजूदा हकायक के साथ ज़रूरी कलील मुद्दती समझौतों को हम आहंग कर सकती हैं और माहौलियाती सोशलिस्ट आलमी और कौमी ग्रीन न्यू डील्स की तरफ तवील मुद्दती निज़ामी तब्दीली की राह पर गामजन रह सकती हैं। इस तरह की तहरीकें ही बनी नौ इंसान की बका की वाहिद उम्मीद हैं। सियासी रहनुमा और इक़्तिदार के जो उनकी मुखालफत करते हैं वो मसला है। मुतवस्सित तबके के दानिश्वर और टेक्नोक्रेट्स अब उसे जाली नहीं बना सकते। वो आ तो उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। आइए मुख्तसर तौर पर इस्लाम और तालीम पर नज़र डालते हैं। इस्लाम ईमान और अमल का हुक्म देता है। ये फ़ाल तौर पर इंसान दोस्त और रहम करने वाला है। ये वो मुहावरा फराहम करता है जिसमें पाकिस्तान के अवाम को उनको कबूल करने और उनके मालिक बनने के लिए समाजी और सियासी पैगामात की ज़रूरत होती है। इस्तेहाद के दरवाजे जो 1000 साल पहले बंद हो चुके थे, उन्हें दोबारा खोलने की ज़रूरत है ताकि इस्लाम के असल पैगाम को दोबारा हासिल किया जा सके, जो कुरान और संत के ज़रिए बराह रास्त मोमिन से बात करता है, न कि किसी ऐसे तबके के ज़रिए जिसके लिए ईमान एक पेशा और असर और रसूख और ताकत का ज़रिया बन गया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी उम्मत कभी भी गुमराही पर राज़ी नहीं होगी। बगदाद में मंगोलों की तबाही के बाद 1000 साल से खोया हुआ ये एतमाद है, जिसे इस्लामी तहजीबी निशअत सानिया के आगाज़ के लिए बहाल करने की ज़रूरत है, जिसमें ईमान, साइंस और इंसानी बसीरत एक दूसरे को मजबूत करते हैं और तबाही से निजात के लिए एक बदलती हुई ताकत पर मुश्तमिल होते हैं। बगदाद, इंग्लिस, ईरान और वस्ती एशिया के हमारे साइंसी और सकाफती वर्से को दोबारा हासिल करने और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सब इस हदीस से वाकिफ़ हैं जिसमें कहा गया है कि इल्म की तलाश करें, यहाँ तक कि चीन से भी। इल्म की तलाश साइंस और तालीम का जौहर है। तालीम याफ्ता राय आमा के बगैर कोई इस्लाहात देरपा नहीं हो सकती और न ही कोई कौमी मकसद हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में तालीम आमा को तरजीह नहीं दी जाती। ये मौजूदा सियासी और समाजी ढांचे के अंदर कभी नहीं हो सकता। ये एक इंसानी हक है और इंसानी हुकूक और तालीम तरजीहात नहीं है, सिवाय बयानबाजी और सेमिनारों, पॉलिसी दस्तावेजात और मंशूर के। वसाइल की कमी कम तरजीह का दूसरा नाम है। आज की दुनिया में तालीम का तसव्वुर तब्दील होना चाहिए। अजीम जर्मन माहिर तालीम विलियम हम्बोल्ट का कहना है कि तालीम किसी बर्तन में पानी डालने का मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक ऐसी तार बिछाने के तौर पर तसव्वुर किया जाना चाहिए जिसके ज़रिए सीखने वाले अपने तरीक़ों से आगे बढ़ें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों और तसव्वुरात को बेहतर बनाएं और दरियाफ्त की खुशी का तजर्बा करें। चुम्सकी याद करते हुए कहते हैं कि उनके एक उस्ताद से जब पूछा गया कि उनके सेमेस्टर में किस चीज़ का अहाता किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या दरियाफ्त किया जाएगा। बदकिस्मती से अथॉरिटी, कदामत पसंदी और निसाब जहाज़ों को भरने पर जोर देते हैं। वालिदैन बजा तौर पर चाहते हैं कि उनके बच्चों को मुनाफा बख्श नौकरियां मिले। लिहाजा इल्म की तलाश के तौर पर तालीम एक तवील मुद्दती कोशिश होनी चाहिए जो फौरी तौर पर शुरू होनी चाहिए।
माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बच्चों को अपनी इब्तिदाई तालीम अपनी मादरी ज़बान में शुरू करनी चाहिए। इसके बाद वो इलाकाई और कौमी ज़बानों में तब्दील हो सकते हैं और बाद में बैन अल-अक़वामी ज़बान से वाकिफ़ हो सकते हैं। पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत है। उर्दू पूरे मुल्क में अच्छी तरह से समझी जाती है और मुख्तलिफ ख़तों के लोगों के दरमियान ज़बान है। अंग्रेज़ी से वाकिफ़ियत, अगरचे हमेशा इसमें महारत नहीं है, ख़ास तौर पर मुतवस्सित और आला तबके में नस्लों से मौजूद है। कौमी सतह पर तालीम याफ्ता और बैन अल-अक़वामी सतह पर बातचीत करने वाले मुआशरे के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स दस्तयाब हैं। एक की तामीर एक ज़िद तरजीह बनना चाहिए। मज़मून निगार अमरीका, भारत और चीन में साबिक़ सफ़ीर और इराक और सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशनों के सरबराह हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 20 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.